India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass make you understand as to what exactly has the budget said and what does it mean for everyone in the country. But let's first begin with some of the key highlights. प्रीति, बिल्कुल, ये जो तमाम बड़ी और मुख्य बातें हैं वो इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी, ये बात बजट में सामने आई है। इसके अलावा जो अहम घोषणाएं हैं, एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान हुआ है। साथ ही आईटीआई में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। छठी जो मुख्य बात है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में ई विद्या के तहत 200 चैनल्स का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी का आईपीओ अब जल्द आएगा। साथ ही 100 साल के ढांचागत निर्माण पर सरकार का अब फोकस रहने वाला है। इसके अलावा 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क तक जो इसका विस्तार है उसको करने की बात कही जा रही। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट जो है वो सरकार की 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। जो नदियों को आपस में जोड़ने की बात तमाम पिछले काफी समय से हम सुन रहे हैं, उसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा देने की बात कही जा रही थी। एक बार फिर बजट में ये बात सामने आई है। रसायन मुक्त जो प्राकृतिक खेती है उसे लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभियान चलाने की बात है और एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीदारी, किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा बजट का 25% दिया जाएगा। भारत नेट परियोजना 2025 तक पूरे होने की संभावना है। इसके अलावा शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात बजट में कही गई है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से देश को गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा नए घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही अगले 5 साल में एमएसएमई सेक्टर को 6,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 2022-23 में चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज को देश में अनुमति दी जाएगी। ये भी बड़ी बात है जो सामने आई है। 2022-23 बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.9% होगा। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो इस बार बजट में सामने आई हैं और हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएम गति शक्ति योजना के उसमें इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल दिस बजट, दिस इज अ पॉजिटिव बजट आई फील। संचित, मैं फार्मा को लेकर ही इस कोविड सिनेरियो में जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर दी हेल्थ के सेक्टर एंड आई फील आयुर्वेदा इंडस्ट्री इज ऑल्सो लॉट टू कंट्रीब्यूट। जहां पे हमारी ऑर्गेनिक खेती की बात करी है वित्त मंत्री ने कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दी जाएगा, तो वैसे ही आई फील कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप हुई थी 2016 में, तो उसके बनने के बाद से लेके अब तक काफी सारे चेंजेस आए हैं जहां पे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ने भी काफी मदद दी है फार्मा सेक्टर को। और आई थिंक आत्मनिर्भर भारत में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 साल तक जो नेक्स्ट वी आर टचिंग 100 ईयर्स, तो उसके अंदर आयुर्वेदा विल प्ले अ की रोल। और उससे आई थिंक जो हमारा डेफिसिट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ का जो डेफिसिट हमारा चल रहा है, आई थिंक आयुर्वेदा इंडस्ट्री को अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो उसके अंदर उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड फार्मा सेक्टर के लिए तो जो ऐलान है वो पॉजिटिव इस कोविड सिनेरियो में जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर दी हेल्थ के सेक्टर
एंड आई फील आयुर्वेदा इंडस्ट्री इज ऑल्सो लॉट टू कंट्रीब्यूट, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक खेती की बात करी है वित्त मंत्री ने कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दी जाएगा, तो वैसे ही आई फील कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप हुई थी 2016 में, तो उसके बनने के बाद से लेके अब तक काफी सारे चेंजेस आए हैं, जहाँ पे आयुर्वेदिक इंडस्ट्री ने भी काफी मदद दी है फार्मा सेक्टर को। और आई थिंक आत्मनिर्भर भारत में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 साल तक जो नेक्स्ट वी आर टचिंग 100 ईयर्स, तो उसके अंदर आयुर्वेदा विल प्ले अ की रोल। और उससे आई थिंक जो हमारा डेफिसिट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ का जो डेफिसिट हमारा चल रहा है, आई थिंक आयुर्वेदा इंडस्ट्री को अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो उसके अंदर उसमें हमारा एक्सपोर्ट जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो सकते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एंड फार्मा सेक्टर के लिए तो जो ऐलान है वो पॉजिटिव। For the excellent collections that they've done, which enables them to still maintain the fiscal deficit at a not a very high rate of 6.4%. They have nearly stuck to the target of last year's fiscal deficit. It was 6.8. They are at 6.9. Specific pushes have been made to enhance domestic industry capability in capital goods. I think this Make in India scheme, emphasis on that, again, an enhancement of the PLI scheme beyond the 13 sectors to a 14th sector, which is solar modules, 20,000 crores attributed to this. I think we've not seen the last of it. The government has clearly now, in the last 1.5 years, and this budget reinforces it, that their push should be a supply side push. And that's what they have concentrated on this budget. They have not wavered on that. There are certain new things they've introduced, cryptocurrency, clearly something which was needed to be legislated upon. They have covered that. RBI is coming up with a digital currency. I think it is a very far-reaching budget, which gradually, as we unravel it, will lead to a clear thinking on the government's part. The element which was holding back competitiveness is removed. The other, of course, outside the budget to increase the efficiency of factory reforms. Therefore, whatever priorities have been laid down in this budget are what was required, what is apt. It talks about inclusive development. It talks about productivity enhancement, which is necessary for all sectors if you have to remain competitive. It talks about investment, especially getting private investment into the economy, which seems to be lagging. It talks about energy transition, which affects each one of us. The climate action, once again, anybody in Delhi would stress to the need of climate action. And financing of investment. All these are very important things. They were required, they were timely. And I must point out that this reform in the SEZs, repealing the SEZ Act, is something which was required. If something is broken, it needs to be fixed. You cannot keep doing the same thing and expecting different outcomes. This was long awaited. It's good that it's been placed on the table now. Okay. Mr. Chandra, you outside the budget to increase the efficiency of factory reforms. Therefore, whatever priorities have been laid down in this budget are what was required, what is apt. It talks about inclusive development. It talks about productivity enhancement, which is necessary for all sectors if you have to remain competitive. It talks about investment, especially getting private investment into the economy, which seems to be lagging. It talks about energy transition, which affects each one of us. The climate action, once again, anybody in Delhi would stress to the need of climate action. And financing of investment. All these are very important things. They were required, they were timely. And I must point out that this reform in the SEZs, repealing the SEZ Act, is something which was required. If something is broken, it needs to be fixed. You cannot keep doing the same thing and expecting different outcomes. This was long awaited. It's good that it's been placed on the table now. Okay. Mr. Chandra, you it's actually again infrastructure linked, yet it is something which is so very significant, because if you do not change the face of urban India,
growth impulses in the economy will get stymied, because most of the action of the entrepreneurs will be happening in urban India. So, I mean, I was surprised at the amount of time that she spent talking about urban paradigm changes. That's a very significant point of the speech. You know, budget speech, budget paras do not get just, it's not just thoughts. These are thought through things. So there's a very clear reason why the finance minister was putting a lot of emphasis on urban issues in the course of our budget speech. And the policy follow-up is also pretty much clear when she's connecting of the entire postal network on digital mission and setting up the 75 digital banking units in most of the districts of the country. 75 what districts. it's essentially doing is connecting the country into a sort of a very smart functioning unit. That's what the government is trying to do. That it's the job of the private sector to lead the investment. We shall be creating the facilities to make them do it. And my job is not to stand around and to actually lead the investment. Like, for instance, the announcement, and that was a useful announcement about the LIC IPO. It clearly means that the government is saying that the LIC IPO is just about to come. It's just around the corner. Just around the corner. Now, these are the sort of stuff that you need for the government to essentially say that we are ready for business. COVID is hopefully on the wane. So now, where is the action going to be? And action is obviously going to be in infrastructure. There are a couple of things more there, which was the surety bonds as a substitute for government guarantee. Now, it's not often understood, but it's a very significant thing. Indeed. Because for MSME sector, raising up government bank guarantees for paying for contractors, for making payments, instead of that, if they can use surety bonds, it actually gives them a huge financial support. Now, these are the sort of stuff that actually would be very useful. These are nuts and bolts, but they are much more important than, you know, giving sort of set-offs here or set-offs there, which don't often translate into actual performance, because those get eaten up in lots of things. But these are functional changes that you're introducing. Okay. And which is when it comes along to the issue of our digital currency. Okay. We'll come. People who can afford to get into that froth, into that new type of asset class. It's a different income group altogether. Now, if that is there, then the government says, fine, if you are going to profit from it, let me also tax you at the rate at which I tax other assets. So I'll tax you 30% and I'm not going to give off any set-off. You cannot say that I've got a loss here, so I'll make it up otherwise. So what the government is saying is, I'm just recognizing it. It doesn't stay under the carpet. I bring it on stream. You do whatever you want in terms of developing the currency, in terms of developing the ability. India has become the startup capital, so there'll be lots of inventive ideas that will be coming out there. But the tax will be there. The digital currency taxation, the digital currency of RBI, which the finance ministers endorsed, is something that is a totally different thing, in the sense that is where it sort of takes on the UPI and all the other things that we have been having. You know, the huge expansion in digital payment system that we have had. This sort of takes it on to the next level. Okay. So therefore, that is something that the government would be promoting and would be saying, yes, that is something that I want to be there. Okay. Yeah. We'll come, the digital currency. Mukundan is joining us. We've spoken about digitization of processes, which will ease the business community's burden in terms of dealing with various nuances. I just don't want to forget a couple of other things which the finance minister spoke, and I think this is very, very important. One is on education. Our next generation has lost out in the last 2 years. The focus on digital education and spreading the access to everyone, I think, is a very, very positive step. Okay. And also on the health, National Digital Health Mission, which has been started, I think is a very important step in terms of giving access to healthcare to a large amount of sections of society. And she's also not forgotten the not focused area of mental health. That has got the central focus this time. So all in all, a very positive budget, and all I can say is that we now have to work Mr. along Mukundan, the sense I get from your response is from private sector. As I mentioned, many sectors are already having huge capacity, have reached capacity point where they need to invest. For example, I can tell you about chemical sector. Most of the chemical companies are investing very hard, not just for India demand, the China plus one opportunity which has come up with the increased supply chain issues which our customers are facing overseas.
India will become a net exporter of many specialty chemicals and other chemicals. But I'm also saying that other sectors which were underutilized, especially in the MSME area, will also get a huge boost. And I think the whole aspect of continuing with the support for a couple of more years, including the whole simplification of SEZ. I think if you look at 400 trillion target, I think the simplification of SEZ, I think that Finance Minister spoke about in terms of taxation and other rules, and working with the state governments in terms of pushing ahead. All these are welcome steps, and you would see that the commitment to at least make India again the fastest growing economy for next couple of years. I think industry will be stepping up investment, stepping up its pace, hand in hand with government to. जो मैं बोलूँगा कि जो फिस्कल डेफिसिट जो है, उसका नया जो ग्लाइड पाथ जो है, वो मैं समझता हूँ कि मार्केट के लिए उतना डिस्ट्रप्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 6.9% इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट था, टारगेट था 6.8%, वो बहुत ही कम बढ़कर 6.9, तो करीबन उसी में हम कह सकते हैं, और उसके ऊपर हम नेक्स्ट ईयर के लिए 6.4% का टारगेट रख रहे हैं. पर अंडरलाइंग these numbers, there is in my view a very positive feature. वो positive feature is about the a cautious budgeting. The nominal growth projections for this budget for next year is less than 12%. In other words, and the current year the nominal growth turned out to be 18%. So clearly the government is budgeting on a very cautious way, and by the time the year ends, that is the next year ends, my sense is that the revenues सरकार की है, उससे आई थिंक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और उसी से हमारे को एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हमारा बढ़ोतरी होगी. तो आई थिंक ये जो R&D इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये दैट विल हेल्प अ लॉट. सो वो हेल्थ को लेकर वो एक एजुकेशन में एक नया एफर्ट देते हैं. डिजिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसा चीज है जिसका हमें रूपरेखा, इसके बारे में किसने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. भारत के हर यूनिवर्सिटीज के अच्छे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके स्कीम्स को, अगर उनके लर्निंग्स को, कोर्सेज को डिजिटल यूनिवर्सिटी के सहारे भारत के उन तबकों के बच्चों के पास लाया जाए, हब एंड स्पोक मॉडल की उन्होंने डिस्कशन किया. ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एक रेवोल्यूशनरी चेंज सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप पहले जरूरत था, और ये चीजें अभी जो आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा. एक चीज मैं टैक्स के बारे में बता रहा था, जो अतुल ने भी जिक्र किया, कैपिटल गेन्स टैक्स का तो है ही, साथ में जो कॉर्पोरेट सरचार्ज जो चेंज किया गया फॉर अमल of the pyramid for employment, that is where they will get it, and it will affect more than 200 associated industries, and thereby give a huge fillip to GDP growth as well as employment, which is the need of the hour. And next, to come on to the fact that 25,000 kilometers of highways, 400 trains to be started, data centers being given infrastructure status, again will add to the real estate development as well as IT sector development. So I think in all, every part has been touched upon. This SEZ Act, which was a sunset act, now is getting a new amended legislation. Drinking water being provided. I think that's very, very, in every sector we will provide development as well as contribution of the industry. Okay. I think the next major vision for the future is what, but also when he said and created a new ministry of cooperatives, I think that is a very major step for agriculture. Reforms be over there, and it is to 7% when it comes to agriculture, 2.37 lakh crores MSP directly to be provided to farmers, wheat and paddy, linking of rivers. I think there is something which is as a vision which is being promoted, and we should then look at the next major initiative, 3 major visions. The next one after housing and agricultural cooperatives is the MSME sector. Indeed. I think being provided over there that yes, to be raised to 5 lakh crores, 2 lakh crores, especially for the MSME sector. I think many duties to be reduced on components which can be taken advantage of by the MSME sector for making world-class
goods for not only the Indian market but also exports, which are now from 400 million. The next target is $650 billion next year. Okay. I think in all, this is what will actually absorb informal labor. Indeed. Not only in the housing and the co-op and the agriculture sector, but also in the MSME sector. So that's where I think when we were talking largely yesterday that there is a key. Okay, those indeed are the three key areas, Mr. Talwar. Addressing some of the concerns that an economy that was recovering from the COVID needed. Yes, I think the long-term capital gains tax will be a relief needed. Yes, I think the long-term capital gains tax will be a relief. There is a taxation treatment for the cooperatives. To my mind, was a big fillip for the cooperative sector, where whether is it through the education in rural India, whether it is the irrigation package, the interlinkages of rivers. So if you look at an overall the agriculture package, माफ कीजिएगा, आपको रोकेंगे इस समय, हम सीधा रुक करेंगे नहीं हो और उसको किसी तरीके से मीट आउट किया जाए। और जैसा कि निर्मला सिंह जी ने बताया भी कि सीट की जो बात बता रहे हैं उसमें जो बोरोइंग है, बोरोइंग को नहीं इंक्लूड कर रही हैं, तो हो सकता है आसान बोरोइंग हो और उस आसान बोरोइंग से जो वेलफेयर मेजर्स लिए जाने हैं और खास करके जो कोरोना पीरियड के थर्ड फेज में जो रिकवरी का फेज चल रहा है, जो बार बार यह बात आ रही है कि जो दो फेज के बाद के लिए भी फिलहाल हम आपके accepted. We are grateful to the finance minister for that. And I think, as you rightly mentioned, this provides the continuity. That is what is very important. So there is no deviation from the set path that has been there for the past couple of years. Specifically, last year to this year, there is a continuity or Montreal Protocol related on energy efficiency or the low global warming or the ozone depletion. It is executed well. So I suppose that we should make it happen. We will continue to interact with the government. In fact, or Montreal Protocol related on energy efficiency or the low global warming or the ozone depletion. It is executed well. So I suppose that we should make it happen. We will continue to interact with the government. In fact, affects delivery. The government over the last few years, this government has actually announced some very major schemes. The Har Ghar Jal is one of those. The scheme for Anna Yojana is another one of those. All of these are very big schemes which are running. Now, any other scheme that comes in and tries to distract from there essentially creates problem. So what the government has done has allowed expansion of the remit of those schemes. In the year, rupee by rupee use of that money which was spent, which is the right of the people in a democracy, and that data is not well. Has the money been spent? Because that gives a lot of ये एथेनॉल में भी आप देखेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और ये आगे बढ़ रहा है हर एरिया में। डिजिटाइजेशन से कितना मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं और डिजिटल लेके उसको कितनी मैक्सिमम बेनिफिट्स ला सकते हैं। Every really walk the talk, but you must also keep in mind that the last 2 years, because of the economic downturn and the consumption was lower, the existing manufacturing 7%, and more or less, if I'm very wishful and hopeful that clearly I see a lot of private sector investment coming into the capital from the industry. The case to the vendors and the companies who are working for a decision in High Court until we have the judgment of the same or similar type of COVID pandemic को ध्यान में रखते हुए further support का जरूरत था और clearly finance minister ने अपना हाथ बढ़ाया है। 2 लाख करोड़ का क्रेडिट साल से उसको एक्सटेंड किया गया अप टू द ईयर 50,000 करोड़ का किया गया। ड्रीम है उसकी तरफ एमएसएमई का एक बहुत ज्यादा हुए हैं इस बजट से। रीजन बहुत सिंपल है, देखिए जो सैलरीड क्लास है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक बेनिफिट चाह रहा था,
50,000 से 1 लाख रुपए की। दूसरा देखिए 80C की एक बेनिफिट होती है 1.5 लाख रुपए की। लास्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स 1.5 लाख की लिमिट है। और 1.5 लाख में क्या क्या आता है? LIC, PPF, PF, ट्यूशन फीस, इवन हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं वो भी उस 1.5 लाख के दायरे में आता है। 1.5 लिमिट और इन्फ्लेशन की रेट को आप देखिए, और 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसको इस 2.5 को भी हमें कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ाना था। और हमारे पास 2 सिस्टम चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम वर्सेस। देखेंगे जब हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए की हमें बेनिफिट मिलती है। जब ऑन सी, PPF, PF, NSC और ट्यूशन फीस, ये लिमिट इतनी देखा, मेडिकल एक्सीजेंसीज हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। जो 25,000 रुपए की लिमिट है, 2500 जो मेडिकल आप रिइंबर्समेंट लेते हैं वो डिसाइड होता है। रेटिंग 25,000 की लिमिट को 50,000 किया जाना चाहिए था, या 50,000 जो सीनियर सिटीजन के लिए उसको 1 लाख किया जाना चाहिए था। आदमी के हाथ में कंजम्पशन बेस, ग्रोथ ओरिएंटेड, वो थोड़ा सा मुझे लगा मायूसी रही। इस मामले में हमारे वित्त मंत्री ने कुछ अनाउंस नहीं किया, जो आज हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक अनाउंसमेंट होना चाहिए था। बट वे फॉरवर्ड फाइनेंस बिल पे भी चर्चा होगी पार्लियामेंट में। हो सकता है कि इस पॉइंट पे हमारी बात रखी जाए और वित्त मंत्री हमारी इन बातों को विमल जैन जी, जो आपने बात कही वो एक पक्ष हो सकता है। ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पॉलिसीज इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू सी प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति मिशन, द मास्टर प्लान दिस फॉर द फ्यूचर गेन्स फॉर द एंटायर कंट्री। मिस्टर सिंह, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट देयर। और दूसरे जो रूरल अलावा अगर आप प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति मास्टर प्लान में जो एक्सपेंडिचर की बात है, जो 7 इंजिन्स ऑफ ग्रोथ की बात है, और साथ में अगर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है पहले से, शायद इतिहास में पहली बार इतना ज्यादा हुआ है, इन दोनों को अगर आप मिला करके देखें तो रोजगार के अवसर अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और की जरूरत पड़ेगी, लोग को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। अब इसमें एक आर्किटेक्ट की भी आवश्यकता कि ऐसे अवसर पैदा में परिलक्षित होगा फिगर जो ग्रोथ रेट की बात कही गई है, बल्कि चूंकि इनकम जनरेशन होगा उनमें वो एक्सपेंडिचर के लिए बहुत सहायक होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को युवाओं की जो डिजिटल जो बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही गेम चेंजिंग एटीट्यूड है और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसमें आपको देखेंगे कि किसानों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। जी। Therefore, the aspirations of the youth and the young country that we are, the government is playing very carefully and taking and leading the country into the next generation. Now, while all these things are happening, while all these frontier technologies are being spoken about and being brought into play, the role of machine learning, artificial intelligence are a strong component in this. If you look at this budget, there was hardly 2 minutes when the finance minister did not use the word technology or digital. So this digital, this technology, and that is where I say the country is poised for a leapfrog. Now, I don't think we are only thinking in terms of a $5 trillion economy. We are thinking of multiples of that. 25 years from now, I think the ropeway story also fits in, because ropeways generate an ecosystem, as was just explained, and also gives an opportunity to a great extent to MSMEs. Yes. And for the MSMEs, the government clearly meant it. Yes. So it just fits in over the ecosystem. That's why I keep saying this budget needs a very thorough understanding, because it is aimed at firstly recovery, revival, employment, and it connects the immediate with the future. All right, let me borrow your statement. Kind of temptation for adopting is not easy to withstand, and therefore focusing on the fundamentals and futuristic growth and employment generation becomes very important. All right, Mr. Das, that's a very important. छोटा सा उदाहरण लूं, अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं और उस सड़क की वजह से वहां जो
अस्पताल पहले विषम परिस्थिति में कोई नहीं पहुंच पाता था, अब आसानी से पहुंच सकता है कुछ किलोमीटर दूर जो है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो सड़क भी तेहन जो कह रहे हैं वो अब जो कि कह रहे हैं तो उस पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। ठीक है, सोचिए कि ये गेम चेंजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार पैदा करने के लिए कैसे हो सकता है जब ये योजनाएं करने की आवश्यकता होगी, वरना आप ये बनाएंगे कैसे? Absolutely, sir. Absolutely, sir. Also joining us. छोटा सा उदाहरण लूं, अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं और उस सड़क की वजह से वहां जो अस्पताल पहले विषम परिस्थिति में कोई नहीं पहुंच पाता था, अब आसानी से पहुंच सकता है कुछ किलोमीटर दूर जो है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो सड़क भी तेहन जो कह रहे हैं वो अब जो कि कह रहे हैं तो उस पर भी हमें विचार करना आवश्यक है। ठीक है, सोचिए कि ये गेम चेंजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार पैदा करने के लिए कैसे हो सकता है जब ये योजनाएं करने की आवश्यकता होगी, वरना आप ये बनाएंगे कैसे? Absolutely, sir. Absolutely, sir. Also joining us. From our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to